हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपके साथ आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। ये टॉपिक इंडिविजुअल रेपर्टरी है, रेपर्टरी ऑफ साइकिक मेडिसिन विथ मटेरिया मेडिका। रेपर्टरी ऑफ साइकिक मेडिसिन विथ मटेरिया मेडिका मीन्स नाम के अनुसार ये रेपर्टरी जो है साइकिक मेडिसिन, मानसिक औषधि, जो मानसिक बीमारी होती है उससे संबंधित ये है, और इसमें मटेरिया मेडिका पार्ट भी है। दिस रेपर्टरी रिटन बाय डॉक्टर जीन पियरे गल्वर्डिन। डॉक्टर जीन पियरे गल्वर्डिन इस रेपर्टरी के लेखक है, राइटर हैं। डॉक्टर जीन पियरे गल्वर्डिन devoted a portion of his life in the research of psychic manifestations of these remedies. All medicinal substances provoke always some psychic and somatic symptoms. होम्योपैथिक मेडिसिन में, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में जितनी मेडिसिन है, अगर उसे हम देखते हैं, या बोरिक रेपर्टरी, बोरिक मटेरिया मेडिका हो, या एलेंस की नोट हो, या अलग मटेरिया मेडिका हो, बहुत सारे मेडिसिन में मानसिक लक्षण पाए जाते हैं, साइकिक सिम्टम्स। ओरिजिनल बुक वाज पब्लिश्ड इन 1890, देन आफ्टर रिपब्लिकेशन इन 1960 बाय गल्वर्डिन्स फैमिली मेंबर। इस रेपर्टरी का फर्स्ट पब्लिकेशन 1890 में किया गया। उसके बाद इसका दोबारा पब्लिकेशन जो किया गया गल्वर्डिन फैमिली के द्वारा 1960 में। ये रेपर्टरी दो पार्ट में बांटा गया है, दो भाग है इसके। नंबर 1 साइकिज्म एंड होम्योपैथी। साइकिज्म मानसिकता एंड होम्योपैथी। सेकेंड पार्ट और दूसरा भाग जो है रेपर्टरी ऑफ साइकिक मेडिसिन विथ मटेरिया मेडिका। रेपर्टरी ऑफ साइकिक मेडिसिन। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक साइकिज्म एंड होम्योपैथी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन साइकिज्म एंड होम्योपैथी, एंड सेकेंड पार्ट contains repertory of psychic medicine with materia medica. It consists of 3 chapters. Second part further divided into 3 parts: plastic medicine, therapeutic part, repertory of psychic medicine. Plastic medicine, therapeutic part, it contains 64 homeopathic medicine and their pathogenesis of mind. Third part, repertory of psychic medicine with materia medica of psychic manifestations. So this is the division of this repertory divided into 2 parts: psychism and homeopathy, and repertory of psychic medicine with materia medica. It consists of 3 parts: plastic medicine, therapeutic part, and repertory of psychic medicine. Gradation in this repertory, gradation of medicine in this repertory, there are 4 grades: capital, bold, italic, and Roman. Capital bold first grade, bold second grade, italic third grade, and Roman fourth grade in therapeutic part. Gradation of medicine in this repertory: 4th grade, capital bold, italic, and Roman. Advantage of this repertory: all types of psychic symptoms are repertoried by this repertory because of having more and marked psychic symptoms. All types of psychic symptoms are repertoried by this repertory because of having more and marked psychic symptoms. Disadvantage: in this part only psychic symptoms are present, other symptoms are not present. Lack of fear symptoms: it is not systematically arranged
even it is alphabetically arranged. So today we see a repertory of psychic medicine with materia medica. This repertory written by Dr. Jean-Pierre Galvardin. First edition in 1890, republication by Galvardin family in 1960. This book divided into two parts, psychic medicine, psychism and homeopathy, and second part, repertory of psychic medicine with materia medica. It contains three chapters: plastic medicine, therapeutic part, repertory of psychic medicine with materia medica of psychic manifestations, gradation of medicine, 4 grades, bold capital, bold, italic, Roman. Advantage of this repertory: all types of psychic symptoms are repertorized by this repertory, also used in mental disorders. Disadvantage: in this part only psychic symptoms are present, other symptoms are not present. Lack of fear symptoms. It is not systematically arranged, even it is alphabetically arranged. So this is a short introduction about this repertory. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Thank you.